This Islam, meeting is being recorded. Assalamu alaikum everyone. In today's session, we're going to discuss about some very important things, which is our, you can say, the last part of our course, and then we're going to move towards some practical sides. We're going to share with you some softwares and some websites that will going to teach you about the programming, like how to program any sort of website or any sort of application, which are actually, you can say, the special sessions of our cyber safe. But in today's session, we're going to just cover up the last part of our course, which is of, you can say, the preventions of your data to be hacked. कुछ preventions हैं वो discuss करनी है, and this is a very important session. So I just want to clear one thing before the session. Like kindly, I need an active participation from you all as well. We have you can say the six participants. So the other participants are going to join as the time will pass out. So today we want to discuss very important things. So आप लोगों को जहां जहां कोई चीज समझना है, so kindly respond me through the comments box, or you can open the mic as well and respond me if you are clear, the things are clear to you all. So you have to mention understood or noted, or if you have any sort of question, so you can ask me there only, because ये बहुत important चीज है, क्योंकि ये नहीं समझ में आएंगी, so it is, all the things are useless, and you cannot like complete the full path of our course cyber safe. पैसे वसूल नहीं होंगे अगर आपको ये जो है वो चीज समझ में नहीं आई. 5 o'clock हो चुके हैं, 5:01 हो चुके हैं, so just I'm going to start the session. Okay, so in last session, as we have already shared the recording, so those who are not able to attend the session for any sort of technical problem, so you can check out the recordings on our YouTube channel or on our Facebook page as well. So there we have uploaded the things. अच्छा, इसके अलावा in previous session we have discussed very much important thing as well. पिछले session के अंदर भी बहुत सारी important चीज discuss की थी हमने. We have discussed about the viruses, like the we have discussed all the security risk which will affect your data to be hacked or to be lost, which is of viruses, their effects, their methods, like how to overcome the problem of virus. Then we've discussed about type of viruses which the hacker used to spam from the email. इसके अलावा we have discussed about the phishing. Phishing is like it is a sort of data capturing technique through the fake websites or through the fake looking emails. इसके अलावा हमने डिस्कस किया था, we have discussed about the effects of phishing and how to uh, resolve the problem of phishing if you are being captured through it. इसके अलावा हमने फार्मिंग जो है वो जो अपने सिक्योरिटी रिस्क को डिस्कस किया था, which is like the hacker will going to install any sort of, you can say, their own web server or their own website which contains a malicious of codes, और वो एक fake website होती है जो कि आपके हार्ड डिस्क के अंदर सिस्टम के वो इंस्टॉल हो जाती है automatically, and then it will going to grab all your data through that वेबसाइट. इसके अलावा इसके इफेक्ट्स डिस्कस किए थे, इसके मेथड्स डिस्कस किए थे हमने. इसके अलावा और आज हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे मेलवेयर. व्हाट इज अ मेलवेयर? सो the session is being started. I need you to kindly be focused now, and I want you to take some, you can say, notes as well, ताकि आप इसको नोट करते रहें. बाद में हम आपको ये स्लाइड तो शेयर कर ही देंगे, but I want you to be very much active. Okay, first thing is like malware. What is a malware? Malware is the difference between computer viruses, worms, and trojans. So ये actually जितने भी, you can say, कि the anti virus softwares or the software, the sites which are used to, you can say, that protect your system from being hacked or from being shared and access to an illegal form. So उन सब का एक टर्म इन्होंने बनाई है malware. So इसके अंदर बहुत सारी इसकी टाइप्स और बहुत सारे इसके areas हैं which we're going to cover up in today's session. Okay, so what is first of all malware? Malware is a short for malicious software. Is any software used to disrupt the computer's operation, gather sensitive information without your knowledge, or gain access to a private computer. It includes any software that gets installed on your machine and perform unwanted tasks, often for some third party's benefit. अच्छा, malware का short form होता है malicious software. इसके अंदर ये एक तरह से ऐसा sort of program है जो कि आपके सिस्टम में इंस्टॉल कर दिया जाता है. इसके आने से your system will misbehave, it will perform malfunctions, it will, you can say that
the computer operations are being disrupt, your sensitive information is being shared to another, you can say a private person without your knowledge. आपकी जितनी भी information होती है, आपको जितना भी system की जितने भी data होता है, वो एक privately जो है वो share कर जाता है किसी और जो है वो user को. So this is actually a type of a storing of data. इसके अलावा it also used to install any sort of, you can say, software in your machine, in your system, and then it will going to first of all gather all the information of a system, and then it will going to share to a third party benefit. Third party का मतलब होता है किसी तीसरे इंसान को भेज देना, जो कि एक तरह से आपका डेटा को जो है वो इनक्रिप्ट कर सकता है, and he can then misuse your data. इसके अलावा दो और टर्मिनोलॉजी हैं which are very much important for understanding malware, लाइक कुकीज. व्हाट आर द कुकीज? आप लोगों ने अक्सर देखा होगा जब भी आप कोई वेबसाइट ऑन करते हैं या फिर कोई भी आप कभी वेब सर्च करते हैं, सो दे यूज टू शेयर यू द कुकीज एंड दे आस्क यू टू क्लिक ऑन एग्री और एक्सेप्टेड. तो इस तरह के जो है वो आपसे मांगते हैं कि आप इसको एक्सेप्ट करें या हमारी जो है वो कुकीज को जो है वो आने दें. सो इट इज एक्चुअली अ सॉर्ट ऑफ अ डेटा which website owners use to share it with the users. Information that a website stores about the user on their hard disk that enables a website to remember detail about the user when they next visit the website. वही चीज है कि इसमें ये होता है कि जो वेबसाइट जो है वो आप लोगों का जो यूजर्स का डेटा, इट विल इंस्टॉल इट, वेबसाइट विल इंस्टॉल द इंफॉर्मेशन, द डेटा ऑफ द यूजर्स, and then when the next visit of the users would take place, so the website will going to show that thing which is being, you can say, shared previously. जो पहले दिखाई थी जो चीज यूजर देखना चाहता है वही चीज जो फिर वेबसाइट शेयर करती है. इट इज नॉट अ इलीगल, इट इज एक्सेसिबल, और ये जो है वो नॉर्मली हर वेबसाइट्स के अंदर होता ही है. Then you have the spam. What is the spam? Spam is actually a junk, unsolicited electronic mail advertising products and services sent to a general mailing list. इसमें जो है आपने देखा होगा ईमेल्स के अंदर जब वहां पर इनबॉक्स का ऑप्शन होता है, जब वहां पे सेंड का ऑप्शन होता है, तो वहां पे स्पैम मेल्स का भी ऑप्शन होता है. ये एक तरह से जंक होता है, ये एक तरह से जो है ट्रैश होता है. ट्रैश नहीं कहते, खैर ये जंक होता है जिसके अंदर वो तमाम ईमेल्स जो कि एडवर्टाइजिंग के एतबार से आई हो या एडवर्टाइजिंग प्रोडक्ट्स की मेल्स हो या कोई सर्विसेज हो, सो दे यूज टू सेंड टू अ जनरल मेलिंग लिस्ट व्हिच इज ऑफ स्पैम. सही है. और यहाँ पर नॉर्मली वो ईमेल्स भी जो है वो शेयर हो जाती हैं, स्पैम मेल्स कंसिडर की जाती हैं जो कि अननोन यूजर की तरफ से हो, जो कि अननोन सोर्स की तरफ से हो, जिसको आप ना नहीं जानते हो. सो दिस एक्चुअली अ सॉर्ट ऑफ अ हैकिंग टेक्निक्स फ्रॉम योर email, from the way of your email. It can be that as well, or it can be either any advertising product which is legal and which is, you can say, an acceptable. So in that case, the advertising products and the services mails are also being sent to the spam by your email id, by your gmail. Okay. कुछ चीजें अगर यहाँ पे समझ नहीं आई है, सो काइंडली कमेंट मी, बिकॉज इट इज अ वेरी मच इंपॉर्टेंट थिंग. और ये कहीं ना कहीं आप जब फर्दर जब कंप्यूटर साइंस की फील्ड्स को परस्यू करेंगे तो आप डेफिनेटली इस चीज को एक्सपीरियंस जरूर करेंगे. So if you have any sort of question, so kindly write it in the comment box, please. Or if you have cleared all the terms and all the things which I've tell you since the 1 minute before, 2 minutes before, so kindly write it in the comment box, understood, noted, or any sort of thing which give me a sign that you are well aware of these terms which I have tell you. Okay, understood, noted. Okay, I have just seen in the course of cyber safe, like only these 3 or 4 students are only responding me. Other are like sleeping. I just want you to wake up, please, because you have paid us, and I want you to learn something from this session. Okay. Next we have the internet scams. We have all experiences this thing, like कभी कभी जो है वो internet scams आप लोगों को किसी भी तरह से any sort of areas which will not जो है misbehave with you, it is actually called as internet scams. Like they are the schemes that deceive the user in various ways and attempt to take advantage of them. Internet scams often aim to cheat the victim of personal property directly rather than personal information through false promises, confidence tricks, and more. इसमें यही बताया जा रहा है कि फॉल्स तरीके से इस तरह की जो है बॉगस वेबसाइट जनरेट करके फॉल्स तरीके से आपको चीट करके विक्टिम की जितनी भी पर्सनल प्रॉपर्टी इसको डायरेक्टली लेने के बजाय दे विल गोइंग टू गिव यू एनी सॉर्ट ऑफ, यू कैन से, greediness, they will show you, and they will
rather than personal information through false promises, confidence tricks, and more. Yeah, they will going to give you any sort of lucky draw, or you can they will told you that share this thing with 4 to 5 people or groups, and you can say that. Fill up the count of the 500 to 400 people, share it with others so that you can win any sort of prize, any car, any electronic item. So this all are actually internet scams, and this will leads to your information to be losted, or आपकी personal information or confidential things they will going to get shared with the unknown user. किसी private server के पास पहुंच जाती हैं आपकी जो है वो चीजें, जितनी भी personal information होती है, चाहे वो it can be either a personal property or can be a personal information. Okay, so the next thing is like these four are the main things regarding the hacking, you can say cracking, और जितनी भी illegal access करने वाली techniques है उन सब की जो है they are the roots of it. Like what is spyware? We have discussed in the previous session about the spyware, मगर यहाँ भी छोटा सा recap दे देते हैं आप लोगों को. Program installed on a PC to gather information about the user. It monitors every key press and relies the information back to the home base. इसमें होता है कि the hacker will going to install any unknown or any unsorted program into your PC, into your desktop, or into a system, and in that case, that unknown website or that unknown program will going to notice each and every activity that you have performed on your system. It can be either any you can say you can if you used to do a web search, or the areas which you visit on the system, like when you open a system you use Microsoft Words, or you use the Google Chrome for any searching. So these all things are being noticed, like what are the areas which you visit on your system, and what are the keys even you pressed while opening any sort of thing. So वो सब चीजों को जो है वो गैदर करके एक एक आपके मूव को जो है वो रिकॉग्नाइज करके अपने आप को नोटिस करके it will go to share to the home base. Home base is actually the third person which have actually planted that program into your PC. So उसके पास तमाम आपकी जितनी भी एक्टिविटीज मूवमेंट्स होती हैं डेस्कटॉप पर, he will know your things very clearly. Spyware का तो ये काम हो गया. Then we have the Trojan horses. What are the Trojan horse? Software that harms your computer but looks friendly like a game or music. अच्छा, यहाँ बहुत दफा ऐसा होता है कि कुछ एड्स आते हैं जिसमें वो कहते हैं आपसे कि इंस्टॉल दैट गेम और XYZ कोई भी जो है वो गेम होता है, और it can be as a game or it can be as any sort of application which you see that it is related to entertainment. Okay, so you used to install it because you will see that it is a very good you can say an application which is very attractive. अच्छा, इसकी एग्जांपल लेके बताता हूँ आप लोगों को. नॉर्मली फेसबुक पर ऐसा होता है कि वीडियोस के बीच में इस तरह के एड्स आ जाते हैं, कोई इस तरह के जो है वो सॉफ्टवेयर्स के एड्स, क्या आप लोग जो है वो पिक्चर फोटो एडिटिंग के एप्स, क्या आप अपनी पिक्चर को जो है इस तरह कर सकते हैं, या आप जो है वो यू कैन से इस तरह के बहुत सारे जो है वो इस तरह एड्स आते हैं. एंड यू विल बी लाइक इसमें ये भी होता है कि आप अगर किसी का फोन नंबर ट्रेस करना चाहते हैं तो आप ये ऐप यूज कर लें, फोन नंबर डालते ही आपको उसकी लोकेशन वगैरह सब मिल जाएगी. तो इस तरह की जब भी ads आते हैं, they used to promote their harmful but looking like a friendly softwares. कुछ कुछ असली भी होते हैं उन फेसबुक एड्स पे जो कि प्रीमियम लेके एड्स को प्रमोट करता है, मगर कुछ जो है वो फेक होते हैं, फॉल्स होते हैं. उसको इंस्टॉल करके आप देखें, आपको कुछ भी उसमें नजर नहीं आएगा. सो आई जस्ट रिकमेंडेड यू टू डू नॉट इंस्टॉल दैट एड्स based softwares because it just looked like a friendly and a very helpful application, but it was actually used to harm your computer or your mobile phone as well. So इस तरह की जो है वो एरियाज को जब आप विजिट करते हैं फेसबुक वगैरह को, तो वहां पर इस तरह के जब एड्स आए, सो डोंट कंसिडर देम एंड स्पेशली देयर सॉफ्टवेयर्स. इसके अलावा बताता है स्पाईवेयर. स्पाईवेयर तो हो गया ना. कैन कैप्चर योर क्रेडिट कार्ड आइडेंटिटी, वेबसाइट हिस्ट्री एंड ईमेल. तो यहाँ पे कुछ और चीजें ऐड की गई हैं स्पाईवेयर के अंदर, कि ना सिर्फ आपकी मूव्स को बल्कि आपके क्रेडिट कार्ड्स, अगर आप जो है उनको उसको एक्सेस करते हैं आपके डेस्कटॉप से, तो आपके क्रेडिट कार्ड्स, आपकी आइडेंटिटीज, आपके वेबसाइट हिस्ट्री, आपके मेल्स, आपके बुक मार्क्स, आपके वेब पेजेस इवन, एंड योर ईमेल अकाउंट्स और पासवर्ड, all the things are being captured and shared to the third person which are actually a private or a unknown user. तो ये स्पाइवेयर बड़ा खतरनाक होता है, पता नहीं होता कि कहाँ कौन सी सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल्ड हो गया हो, सही है, और इट विल मेक योर सिस्टम टू बी हैक्ड. इस सब का जो है वो
you can say these all are made to hack your data, to hack your system, and to share an unknown to share your private or confidential things to an unknown user through these all sort of softwares. But these all are being very much popular for an illegal purposes. But the in today's time there are many preventions are also being occupied to make the user safe from these sites. तो वो भी डिस्कस करेंगे हम आज के सेशन में फर्दर ऑन. एडवेयर क्या होता है? फ्री सॉफ्टवेयर दैट हैज एड्स. अच्छा, इसमें जो होता है कि वो सॉफ्टवेयर जो कि एड्स के थ्रू प्रमोट किया जाए, जो कि फ्री हो. कुछ होते हैं परचेजेबल होता है जो कि प्रीमियम एड्स, जो कि प्रीमियम सॉफ्टवेयर होते हैं दैट आर बीइंग मार्केटेड बाय द एड्स. बट among these all there are many softwares that are free but they has ads. वेबसाइट ओपन करते हैं, आपको कोई एड दिखता है सामने किसी भी सॉफ्टवेयर का, एंड दे आर pressurizing you that installed it, downloaded it, extracted it to your system, these all sort of things. So ये एडवेयर होता है, ये भी एक तरह से टेक्निक है हैकर की टू स्टोर योर डेटा, और आपके सिस्टम में एंटर होने की टेक्निक है ये भी एक. सो डोंट consider those free softwares that has ads, because these are actually an adware, a type of a hacking technique. So I hope these all internet scams and these hacking terminologies are being understandable or are being understood to you all. Kindly show me your presence. आप कुछ present show करें, अपने understood note लिखें यहाँ पर. कोई question है, कोई curious, so definitely ask me so that I can respond you and I can make the thing clear to you. Okay, not yet, sir, not yet. Okay. So some students are saying that they don't have any question till now. So I was really thankful कि आप लोगों को question नहीं है. So but if you if you will have a question afterwards from when we move towards another slide, so आप तब भी पूछ सकते हैं, कोई ऐसा issue नहीं है. अगर सेशन के बाद भी आप पूछ सकते हैं while reviewing the recordings or while doing your home task. If you have any sort of question, so don't Google it, because वहाँ पे अलग चीजें बताई जा रही होंगी आप लोगों को. लेवल आप लोगों का जो है वो यहाँ पर आप लोग मैच कर रहे हैं स्कोर्स के अंदर. गूगल की लेवल कुछ और होगा, फिर आपको ढूंढने में मसला होगा, यू विल गेट कंफ्यूज. सो रिव्यू आर recordings again and try to resolve a doubt, or if you can't able to resolve a doubt by the recording, so we are available on the email technolitrate.official365@gmail.com. so वहां पर आप जो है वो easily communicate कर सकते हैं. We have a huge number of team that are being there around 8 to 10 hours, so they will going to respond to you there or any sort of question. Okay, now we're going to move towards the next thing. Like first of all, let's discuss about this picture, like different types of malware. अच्छा, बहुत सारे malwares की types भी होती हैं, जिसको हम एक एक करके जो है वो जो है इसको जो है वो you can say discuss करेंगे. Adware जो कि अभी डिस्कस कर चुके हैं हम. ransomware क्या होती है ये मैं आपको जब डिस्कस करेंगे तभी बताऊंगा मैं. spyware डिस्कस हो चुका है. वायरस, worms लास्ट सेशन में हो चुका है, मगर इस सेशन के अंदर भी एक थोड़ा सा रिकैप दे दूंगा मैं. Trojan horses, rootkits and bots. so यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि these are some very unknown terminologies which we have discussed already, and some are, you can say, that are new for you all. So we will discuss one by one each and every type of malware in the upcoming slides, so that you can be able to describe them all, and you will be well aware of these type of you can say malwares. Okay, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर दोबारा से मैं को डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज यहाँ पर कुछ अपडेटेड और यहाँ पर कुछ जो है वो एडिटेड हुआ कोई चीजें होंगी जो पीछे डिस्कस नहीं की हमने. सो लेट्स डिस्कस अबाउट दोस थिंग्स इन दिस स्लाइड ओनली. पीछे हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था, यहाँ पर हम जो है वो इसकी मेन थिंग और पूरी प्रॉपर जो है वो चीजें डिस्कस करेंगे. इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस एज वेल, तो वो भी आप पूछ सकते हैं. ओके, malware is a short for malicious software, meaning software that can be used to compromise computer functions, steal data, bypass access controls, or otherwise cause harm to the host computer. वो चीजें आपके functions को disrupt कर सकते हैं, आपका data steal कर सकते हैं, control access, they will go to share your control access to the unknown user, और they will going to harm to the host computer as well. मतलब कि आपका जो computer होगा, जो user का जो computer होगा, जो victim actually, उसका system भी जो है वो
हार्म कर सकते हैं। Malware is a broad term that refer to a variety of malicious programs. Most common type of malware is adware, bots, bugs, rootkits, spyware, Trojan horses, viruses and worms. So ये सब जो है वो वन बाय वन डिस्कस करेंगे। कुछ जो हम डिस्कस कर चुके हैं पर कुछ जो है आप उससे वेल अवेयर नहीं है। ओके, एडवेयर। Adware, short for advertising supported software, is a type of malware that automatically deliver advertisements. इसमें वही होता है adverts में आप लोगों को जो है वो different types of, you can say, they'll go to share you the ads and they want you to respond them by installing or by reacting on that ads. तो ये एक्चुअली एक तरह ट्रिक होती है, इट्स अ पार्ट ऑफ एन एडवेयर। कोई उसमें कोई वो सब फेक वो होते हैं, एड्स होते हैं कुछ को छोड़ के, जो कि अपने चीज को प्रमोट करना चाह रहे हो थ्रू द फेसबुक और थ्रू द एनी सोशल मीडिया साइट। सो दीज आर द वैलिड, बट कुछ ऐसे अननोन सॉफ्टवेयर्स को प्रमोट कर रहे हो, ऐसे एप्लीकेशन को जो प्रमोट कर रहे हो, सो दीज ऑल आर द फेक वेबसाइट्स, सॉरी फेक एडवर्टाइजमेंट्स दैट आर द पार्ट ऑफ एडवेयर। Common examples of adware includes pop-up ads on websites and advertisement that are displayed by सॉफ्टवेयर। अच्छा, इसमें ये होता है जो मैं आपको पहले बताया कि वही जब आप कोई वेबसाइट ऑन करते हैं उस पर आपको एक ऐड दिखता है, पॉपअप होता है एक ऐड। तो वो ऐड आपको कोई भी किसी भी चीज का हो सकता है, किसी भी जो है वो ब्रांड तो खैर नहीं होते हैं, किसी भी जो है वो यू कैन से एनी सॉफ्टवेयर और एनी सॉर्ट ऑफ एप्लीकेशन, किसी भी चीज का होता है। तो वो एक तरह से यू कैन से इट्स अ पार्ट ऑफ एडवेयर, यू डोंट हैव टू रिएक्ट इट, क्योंकि उसके थ्रू आपके सिस्टम में ऐसा कोई यू कैन से कोई ऐसा प्रोग्राम इंस्टॉल हो जाएगा या ऐसी चीज आ जाएगी, वायरस एक्ट कह सकते हैं इजी टर्म के अंदर, तो जो कि आपके सिस्टम को हार्मफुल मतलब कर सकता है, हार्म पहुंचा सकता है। देन यू हैव द, यू कैन से, advertisement that are displayed by software. अच्छा, oftentimes software and application offer free versions that come bundled with adware. ये भी होता है कभी कभी बहुत सारे एड्स आते हैं, उसमें जो है बहुत सारे फ्री सॉफ्टवेयर को प्रमोट किया जा रहा होता है। इसमें ये होता है कभी कभी ऐसे सॉफ्टवेयर भी होते हैं कि आप अपना कैमरे को जो है वो एक तरह से प्रोजेक्टर बना सकते हैं, यू कैन प्रोजेक्ट एनीथिंग थ्रू द कैमरा, जो वीडियो आप देख रहे होंगे वो दीवार प्रोजेक्ट हो जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं है, दीज ऑल आर द फेक एंड बोगस एड्स। ये सिर्फ और सिर्फ आपको ट्रिक करने की होती है, आप उसमें रिस्पॉन्ड करेंगे, आपका सिस्टम जो है वो एक्सेस, आपके कंट्रोल्स जो है वो शेयर हो जाएंगे अननोन यूजर को। तो ऐसा मत कीजिएगा आप। Most adware is sponsored or authored by advertisers and servers as a revenue generating tool. बहुत दफा ऐसा भी होता है कि कुछ जो है वो एडवेयर्स ये होते हैं जो स्पॉन्सर्ड होते हैं, जो कि अब ऐसे एड्स जो कि स्पॉन्सर्ड किए जाते हैं किसी की तरफ से, लाइक उस पर आपने कभी देखा होगा कि व्हेन यू हैविंग एनी एड बिटवीन द फेसबुक वीडियो, तो वो नीचे लिखा होता है स्पॉन्सर्ड। तो वो उस तरह के जो एड्स होते हैं दे आर बीइंग ऑथराइज्ड बाय एनी स्पेसिफिक एडवर्टाइजर्स और सर्वर्स दैट आर बीइंग यूज्ड फॉर जनरेटिंग द रेवेन्यू। मतलब ऑब्वियसली उन एड से पैसे बन रहे होते हैं, जितने लोग उस एड्स को देखते हैं और जो भी जिस जिस जगह पे वो एड्स चलते हैं, ऑब्वियसली उन एरियाज के जो है उनको रेवेन्यू मिलता है, पैसे मिलते हैं। ओके, सो दिस कुछ कुछ जो है वो रियल भी होते हैं, जो कि लिटरली, जैसे फॉर एग्जांपल ले लें, हम टेक्नोलाइट्रेट है, हमने अपना एड बनाया और अब हमने वो एड बेचा है फेसबुक को, एंड देन इट विल गोइंग टू showing in any sort of videos। तो ये एक तरह से वैलिड है बिकॉज Technolitrate is an official program, it is a Facebook community which are doing something। तो ये एक तरह से जो है वो वैलिड हुआ। पर कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं या कुछ ऐसे साइट्स होते हैं जो कि मतलब फेक होती हैं, जो किसी तरह से मतलब जो एग्जिस्ट नहीं करती। सो दीज आर एक्चुअली द पार्ट ऑफ एन adverts। okay, then we will have bots। What are the bots? Bots are software programs created to automatically perform specific operation। अच्छा, खुद ब खुद जो है ये bots जो होते हैं बहुत ही माइनर एक तरह से बग होता है, एक वायरस होता है जो कि आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाता है, एंड दे आर यूज्ड ऑटोमेटिकली परफॉर्म स्पेसिफिक ऑपरेशंस परफॉर्म कर देता है, खुद ही सब चीजें हो रही होती हैं आपके सिस्टम में। यू आर नॉट अवेयर ऑफ दीज थिंग, बट द बॉट्स आर एक्चुअली automatically performing these specific operations। While some bots are created for relatively harmless purpose, video gaming, auctions, online content, etc., it is becoming increasingly common to see bots being used maliciously इन एरियाज में, काफी ज्यादा हार्मलेस पर्पसेस के थ्रू, वीडियो गेमिंग्स में, इंटरनेट ऑक्शंस में, ऑनलाइन कॉन्टेस्ट के अंदर, इन जगहों पर बहुत दफा बॉट्स का जो है वो अमल दखल हुआ है, बिकॉज इन दीज एरियाज आर बीइंग मेड बाय द अननोन और प्राइवेट यूजर्स, प्राइवेट
site. So you will definitely experiences the bots there. Bots are actually a small type of software that have a malicious of codes. बहुत सारे कोड्स को मिलाकर एक स्मॉल सा बग बनता है जिसको हम बॉट कहते हैं, और जो कि इन जगहों पर अमूमन जो है वो एक्सपीरियंस होता है लोगों को. एग्जाम्पल ऑफ बॉट्स: DDoS अटैक as spam bots that render advertisement on website. वही DDoS अटैक के अंदर जब भी मैंने आपको डिस्कस किया डिनाइल, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विसेज अटैक फर्स्ट सेशंस के अंदर, तो वहां का यहाँ पे लिंक्ड हो रहा है. तो DDoS अटैक और या फिर कोई स्पैम बॉट्स होते हैं जो कि एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू जो है वो प्रोमोटेड किए जाते हैं, एंड देन द यूजर विल रिएक्ट ऑन इट, एंड देन हिज और हर डेटा वुड बी लॉस्टेड. Prevention method. What is the prevention? Website can guard against bots with captcha tests that verify users as human. अच्छा जी, ये बहुत ही कॉमन एरिया है. इसमें ये होता है कि जब भी वेबसाइट आप ओपन करते हैं ना, तो वेबसाइट सबसे पहले चेक करती है कि आप एक रोबोट तो नहीं है, आप कोई ह्यूमन है. तो इसके अंदर ये होता है कि आप बॉट्स को वेबसाइट के थ्रू अपने सिस्टम में एंटर करने के लिए आप जस्ट यू हैव टू फॉलो अप द कैप्चा. कैप्चा जो है एक तरह से टेस्ट होता है विच व्हेन यू क्लिक ऑन दैट, लाइक आई एम नॉट अ रोबोट. एक चीज आपने एक्सपीरियंस की होगी, अभी भी ईमेल जब आप बनाते हैं ईमेल अकाउंट में, तभी वो कहता है कि इस डायलॉग बॉक्स पर क्लिक करें, टिक करें कि आई एम नॉट अ रोबोट. सो इट इज एक्चुअली कॉल्ड एज अ कैप्चा टेस्ट. फिर उसमें कुछ इमेजेस आती हैं आपको, ट्रैफिक लाइट्स की, लोगों की, एंड यू हैव टू मैच दोज यू कैन से पिक्चर्स. तो उस पिक्चर्स को मैच करके इफ यू विल डू इट एक्यूरेटली, सो वो कंसिडर करता है कि हाँ आप ह्यूमन है. कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ जो है वो टेक्स्ट आते हैं लिखे हुए, इट इज इन यू कैन से रफ फॉन्ट्स एंड इट इज नॉट क्लियरली बी रीडेबल. सही है, मगर आपको वो जो है वो वॉइस सुनकर जो है वो यू हैव टू टाइप दैट वर्ड ऑन योर टेक्स्ट बॉक्स. तो ये एक तरह से कुछ टेस्ट होता है जिसके थ्रू आप बॉट्स को वेबसाइट के थ्रू आप सिस्टम में आने से रोक सकते हैं बाय डूइंग दिस कैप्चा टेस्ट. ओके, सो यहाँ पर टाइम जो है काफी कम रह गया, जस्ट 3 मिनट्स आर रिमेनिंग. सो यहाँ पर हम बॉट्स पर एंड करते हैं, एंड देन द फर्दर types of malware we will discuss in the next sessions. Okay, so next session में ये discuss हो जाएगा. As you can see that our session are left very less sessions are left. So अब हमें जो है वो आज के सेशन तो हमारा हो गया, अब नेक्स्ट वीक का सेशन में हम इसको डिस्कस करेंगे, एंड देन वी विल हैव अरेंज सम स्पेशल सेशंस फॉर यू ऑल, एंड आई वांट यू टू शो सम एक्टिव पार्टिसिपेंट, ताकि जो है वो अगर कोई गेस्ट सेशंस भी अगर हम ऑर्गेनाइज करवाएं, जो कि हमने जो है वो ग्राफिक टेस्टिंग में करवाए भी हैं कोर्स में. सो आई नीड यू टू शेयर योर एक्सपीरियंसेस इन बिटवीन द सेशन ओनली. फीडबैक शेयर किया करें सेशन के दरमियान ही, कोई क्वेश्चन हो तो डेफिनेटली पूछा करें, और अगर आपको जो सब चीज समझ में आ रही है तो आप साथ साथ रिस्पॉन्ड करते रहा करें, अंडरस्टैंड और ये वो, ताकि अगर कल को कोई गेस्ट भी आया तो आप जो है यू विल नॉट बिहेव लाइक अ डेड बॉडीज. यू हैव टू बी एक्टिव व्हेन द guest will going to question you any sort of question through the course, so आप जो है उसको आंसर कर सकें. You don't just sitting like a dead bodies, you have to respond it. Okay, इसके अलावा कोई भी क्वेरी होती है, टेक्निकल प्रॉब्लम्स होते हैं, अभी भी कोई 2-3 जो है वो स्टूडेंट्स ने आज ज्वाइन नहीं किया सेशन को, सो इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन क्वेरी, सो आप उसको जो है वो डेफिनेटली टेक्नोलाइट्रेट ऑफिशियल 365@gmail.com हमारी ईमेल एड्रेस है. बाबा मैं रिपीट करता हूँ, यू हैव टू कम्युनिकेट विद अस देयर ओनली. वहां पर हमारी टेक्निकल टीम मौजूद है, वहां पर वो आपसे कोई क्वेरी या इशू होगा वो रिजॉल्व कर देगी. इफ यू आर एब्सेंट इन एनी सेशन, सो यू हैव टू write an excuse application and your reason why you have not joined it, ताकि फिर रिकॉर्डिंग्स आपको जो है वो एक्सेस कर दी जाए. इसके अलावा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारा टेक्नोलैट्रेट नाम से चैनल है, लिंक भी हमने शेयर ऑलरेडी कर दिया आपको ईमेल के थ्रू, तो वहां पर आप चेक कर सकते हैं रिकॉर्डिंग्स, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो सारी रिकॉर्डिंग्स आपको जो है वो मिलती रहेंगी. यू कैन चेक दिस आउट. ये रिकॉर्डिंग भी अभी अभी से कुछ 2-3 घंटों बाद जो है वो पब्लिश कर दी जाएंगी. ओके, सो यहाँ पर एंड करते हैं. Thank you so much for joining the session. If you have any sort of question, so email us or review the recording so that you can able to complete the home task as well. Thank you so much, students, for joining. Take care. Allah Hafiz.